नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इस चैनल पर आपको सबसे आसान तरीके से इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट समझाई जाती है। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से ग्राफ के माध्यम से ISLM मॉडल में इक्विलिब्रियम डिसाइड किया जाता है। इन दिस वीडियो हम मैथमेटिकली किस प्रकार से टू सेक्टर मॉडल में IS फंक्शन डिराइव किया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। टू सेक्टर का मतलब है दैट देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, बिजनेस सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। IS कर्व चूंकि प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम शो करता है, तो इक्विलिब्रियम की शर्त है प्रोडक्ट मार्केट में दैट एग्रीगेट डिमांड शुड इक्वल एग्रीगेट सप्लाई। या दूसरे तरीके से हम कहें दैट प्लान्ड सेविंग्स मस्ट इक्वल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। दिस इज द कंडीशन फॉर product market equilibrium. In Keynesian system, in two sector model, aggregate demand consists of consumption and investment. Consumption is demand from household sector and investment is demand from business sector. Consumption is supposed to be function of income, particularly disposable income, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट इसमें नहीं है, so there is no difference between income and disposable income. Consumption is A plus BY. A is autonomous consumption, means part of consumption which is independent of income. Income के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स कंजम्पशन को प्रभावित करते हैं वो हम A में शामिल कर रहे हैं। BY is the induced consumption, where B is marginal propensity to consume. So BY is induced consumption. Similarly, this is investment function. Investment function is also of two parts, I0 and HR. I0 is autonomous investment, that is the part of investment which is independent of rate of interest. HR is the induced investment, in which H is the interest sensitivity of investment, which means the impact on investment of 1% change in rate of interest. अगर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट में कितना प्रभाव पड़ता है, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय H. Aggregate supply is Y. So equilibrium condition requires that aggregate supply should equal aggregate demand, aggregate supply Y should equal aggregate demand C plus I. C की जगह पर कंजम्पशन फंक्शन लिख दिया गया A plus BY, और I की जगह पर लिख दिया गया इन्वेस्टमेंट फंक्शन I0 माइनस I0 HR. नाउ इस इक्वेशन को अगर हम रीएडजस्ट करते हैं, ये Y को इधर ले आते हैं, देन वी फाइंड y minus by is equal to A plus I0 minus HR. यहां से y कॉमन कर लिया गया, 1 minus b, ये एक्सप्रेशन हमको मिल गया। नाउ इस पूरे को 1 minus b से डिवाइड कर दिया गया, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। दिस इज द IS फंक्शन। दिस इज IS फंक्शन बिकॉज दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम। सिमिलरली, अगर हम सेविंग इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इक्विलिब्रियम कंडीशन डिराइव करना चाहें तो सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एंड सेविंग इज व्हाट, y minus c, because y is equal to c plus s on supply side. So saving is y minus c. कंजम्पशन फंक्शन की जगह पर a plus by लिख दिया गया, एंड वी हैव दिस एक्सप्रेशन। इन दिस एक्सप्रेशन y कॉमन कर लिया गया यहां से, तो हम प्राप्त किए माइनस a 1 माइनस b y। I is equal to I0 minus HR. Now equate these two, s and y, we have this expression, and by solving this expression we find this. This is also IS function. Compare these two are identical. Y is equal to A plus I0 upon 1 minus b, y is equal to A plus I0 upon 1 minus b, minus h upon 1 minus b into r, minus h upon 1 minus b into r. So, which
whichever method you apply, either aggregate demand, aggregate supply method or saving investment method, the investment function will be same from both the methods. Now we have taken a numerical example to show how exactly investment function is derived. Consumption function is 10 plus 0.5y. 10 is autonomous consumption, 0.5 is marginal capacity to consume. I is equal to 200 minus 2000 R. 200 is autonomous investment and 2000 is interest sensitivity of investment. For equilibrium, y should be equal to c plus I, as I already know. So y is equal to c plus I. Solving, 0.5y is taken to this side. So y minus 0.5y is equal to 10 plus 200 minus 2000 R. 0.5 is equal to 210 minus 2000 R. Y is equal to 210 divided by 0.5, 2000 divided by 0.5, and we get this IS function. This is investment saving function. From this function, we find that there is negative relationship between income and rate of interest. It means if IS curve is drawn graphically, then we will have negatively sloped curve because these two are negatively related. If graphically this is drawn, then we will have a negatively sloped IS curve. This is how we derive an IS curve in two-sector model. Keep in mind that in two-sector model, we have only business sector and household sector. इस वीडियो में इतना ही. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद.